नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। खेल, उद्योग और पर्यटन राज्य मंत्री डॉक्टर जयराम भाई गामित ने गुरुवार को उकाई जलाशय आधारित सौगांध उच्छल निजार उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत कुकुरमुंडा के कोराला और निजार गांवों का दौरा किया और जल का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ने किसानों और ग्रामीणों के कल्याण, समृद्धि और सुख के लिए पूजा प्रार्थना की और पवित्र जल की पूजा की। इस अवसर पर राज्य मंत्री जयराम भाई गामित ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को समय पर सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। सिंचाई के विस्तार से कृषि उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी, जिससे ग्रामीण विकास को नई गति मिलेगी। सरकार की दूरदर्शी योजना के फलस्वरूप 502 आदिवासी क्षेत्रों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने का महान सपना साकार हुआ है। ये उल्लेखनीय है कि तापी जिले के किसानों को मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल से 962 करोड़ रुपए का उपहार मिला। केवल निजार और कुकुरमुंडा तालुकों की बात करें तो इस योजना के तहत यहाँ के 59 गांवों में कुल 32,500 एकड़ भूमि को सिंचाई का सीधा लाभ मिलेगा। राज्य मंत्री डॉक्टर जयराम भाई गामित की यात्रा में संबंधित विभागों के अधिकारी, जनप्रतिनिधि, स्थानीय पदाधिकारी, किसान और ग्रामीण उपस्थित रहे। दीपेश भाई रामानंदी की रिपोर्ट। आज तापी जिला में कुकुरमुंडा ने निजर खाते आ विस्तार सौथी मोटी सिंचाई योजना में देशना आदरणीय वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी साहेब और गुजरात सरकार मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहेब, भाई संघवी साहेबे आ योजना माटे मंजूरी आपी हती અને વર્ષોથી અમારા ખેડૂતોની આ વિસ્તારના આગેવાનોની કાર્યકર્તાઓની પણ માગણી હતી કે પેટીએમમાંથી દૂધવન સિંચાઈ કરીને લિફ્ટ ઇરિગેશન કરીને અમને પણ પાણી મળવું જોઈએ એ માગણી સરકારે પૂરી કરી છે। ત્યારે આજે કુકરમુંડા કોરાલા ખાતે અને આ પ્રોપર નિઝર ખાતે અમે લોકો અત્યારે આ પાણીનું ટેસ્ટિંગ પણ કર્યું અને પાણી અત્યારે ચાલુ પણ કરવામાં આવ્યું, એટલે આગામી દિવસોમાં આ વિસ્તારના ખેડૂતો, પશુપાલકો એનો ખૂબ લાભ થશે। અને જે રીતે ખેતી કરવા માટે પ્રથમ તો પાણીની સૌથી વધારે જરૂરિયાત હોય છે, એટલે લોકોની વર્ષોથી જે માગણી હતી એ પણ પૂરી કરી અને આજે આ કાર્યક્રમમાં અમારા જિલ્લા ભાજપના પ્રમુખ સુરજભાઈ વસાવા, અમારા પ્રદેશ કિસાન મોરચાના ઉપપ્રમુખ મહેન્દ્રભાઈ પટેલ, કિસાન મોરચાના જિલ્લાના પ્રમુખ મહિલાલભાઈ, મંડળના પ્રમુખ દીપકભાઈ, અમારા આદિજાતિ મોરચામાંથી સુહાગભાઈ, રમેશભાઈ, ઈભાઈ, તમામ ખેડૂત અગ્રણીઓ પણ અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા, ગામના આગેવાનો અને સિંચાઈના કર્મચારીઓ પણ આ જે કામકાજ કરવાનું હતું એ પણ સમય મર્યાદામાં પૂરું કરીને એ પણ એમણે પૂર્ણ કર્યું છે। તો ફરીથી સરકારશ્રીનો અને સિંચાઈ વિભાગનો આભાર માનું છું। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।